Hello, 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 hello.
Please confirm if I'm audible. Moini, good evening, Moini. Someone please confirm if my voice is clear. Moini, if you can. Hello. मोनी मेरी आवाज सुनाई दे रही है उस पे लाइव? मेरी आवाज सुनाई दे रही है लाइव स्ट्रीम पे? ओके, थैंक यू वैष्णवी। So we will wait for 8 more minutes. We will start the discussion from 6:30 onwards. एक बार फिर से आप लोग कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू राधिका, थैंक यू। सो गुड इवनिंग टू ऑल द हैव जॉइंड सो फार। थोड़ा सा मे बी फेस क्लियर नहीं आ रहा होगा ड्यू टू नॉन अप्रोप्रिएट लाइटनिंग हियर इन द रूम, बट स्टिल वी कैन मैनेज विद दिस।
All right, 3 more minutes to go. Shall we start now? I think it's almost 6:30. If in the course of discussion, if you have any query, question, uh, you can ask it in the chat as well as you can WhatsApp me or you can ask it in the WhatsApp group also. ठीक है? All right. So regarding current, uh, due to uh, due to poor connectivity, it was uh, now we are live. Okay. ठीक है. Now there was connectivity issue. Can someone give me a thumbs up so that we can start? That everything is clear. Hello. Hello. Am I audible now? Mohini, Radhika, am I audible? Okay, Radhika, thank you. So regarding current affairs, we have to understand that मेंस अभी हुआ है and against it reinforced the fact that current affairs remains one of the major areas that you have to prepare. See, jahan tak as far as the prelims is concerned, you see the prelims examination, I took the paper and calculated that how many questions have come from current affairs. So in the prelims 2024, more than 35 questions were from prelims. And last year, throughout the year, I was keep explaining to students that as far as subjects like science and tech, economics concerned, please focus on current affairs. And out of 9 questions in science and tech, 8 questions came from current affairs. Okay. So anyway, not specific to science and tech, but 35 questions came from current affairs in prelims examination. All right. Acha. These 35 questions are mostly in science and tech, economy, environment, na? Then polity. These are the main areas from where questions will come in prelims examination. All right. अच्छा, पढ़ना कैसे है? How to prepare current affairs for prelims examination and for mains examination? See, I keep repeating this thing that the approach of current affairs for prelims as well as for mains must be different. ठीक है? तो the way I am giving you notes, summary notes of monthly magazines, लास्ट मंथ का भी मैं जुलाई का नहीं दे पाया हूँ, 4-5 दिन, अगले 4-5 दिन में I will give you the summary of both July as well as August.
है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर रीडिंग दैट मच, मोर देन सफिशिएंट एज फार एज योर प्रीलिम्स करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स इज कंसर्न। रिगार्डिंग मेंस एग्जामिनेशन, अच्छा ये भी है कि we will start discussion on prelims current affairs from अक्टूबर ऑनवर्ड्स। हम लोग मई 2024 टू अप्रैल 2025 तक का कवर करेंगे। मोर ओवर आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, every month you have around all the small and large topics taken, we have around 80 to 90 small and large topics for prelims examination every month। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस उसकी अक्टूबर ऑनवर्ड्स, एंड फ्रॉम माय साइड एटलीस्ट आई कैन assure you that you will have classes for all the current affairs that for every month। moreover you will have plus revision, this will be in the month of March and April। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस के लिए कैसे करना है, कि अभी मेंस एग्जामिनेशन हुआ है, जो भी करंट अफेयर्स आएगा मेंस एग्जामिनेशन में, इट विल बी फ्रॉम सितंबर 2024 टू अगस्त 2025। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू हैव वन क्लास वन क्लास every week, and in this one class we will cover 2 to 3 topics of mains examination, means current affairs for the purpose of mains examination। इसके लिए आई विल गिव यू समरी नोट, है ना, जो मैंने आपको ग्रुप में दिया हुआ है। वैसे समरी नोट में सारे सब्जेक्ट्स पे दूंगा कि ये समरी नोट इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि इट लुक्स लाइक ए समरी नोट, बट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ करंट अफेयर सोर्सेस। ठीक है, तो अगर आपको इन केस यू आर कमिंग अक्रॉस any additional discussion, any other article, opinion, editorial related to this, so that you can add in the same, है ना, जो आपको नोट्स है उसमें आप ऐड कर सकते हो, उसको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समरी नोट्स को संभाल के आप रखिएगा, कीप इट, क्योंकि यू नेवर नो कि ये कब काम आ जाएगा, इस साल काम आएगा कि उसके नेक्स्ट ईयर काम आएगा, उसको संभाल के रखें आप, और मेक श्योर कि इफ यू कम अक्रॉस एनी एडिशनल कंटेंट यू कैन अपडेट द समरी। उसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट समरी एंड मेक श्योर कि वन साइड इज एम्प्टी, ब्लैंक, सो दैट कि अगर कुछ ऐड भी करना हो तो आप बैक साइड में उसके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट, अच्छा हम लोग जो है जहां तक मेंस की बात है ना, मेंस का हम लोग करंट अफेयर्स वी विल रीड अप टिल मार्च, है ना। उसके बाद जब आपको एग्जाम अप्रैल में आपका एग्जाम है, खालिद, we will have one class for mains examination almost every week, and separate classes we will have for prelims examination, है ना। उसमें उसका अरेंजमेंट मैं और ज्यादा क्लियरली बताऊंगा नेक्स्ट मंथ जब हम प्रीलिम्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो मेंस की क्लासेस जो ये मार्च तक चलेगी, फिर उसके बाद आप आफ्टर जून टू अगस्त ये आपका फर्दर जो मेंस क्लासेस हम शुरू करेंगे, जो कि कवर करेगा फ्रॉम मार्च टू अगस्त। ठीक है, ओके खालिद, ऑल राइट। So today we will discuss 2 topics. The first topic is simultaneous elections। Simultaneous elections,
सेकेंड टॉपिक इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। आप देखें कि द प्राइम मिनिस्टर while giving his speech on 15th of August referred to both 15 अगस्त की भाषण में उन्होंने दोनों के का जिक्र किया, फर्स्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड सेकंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है इन यूपीएससी। आई थिंक इट वाज इन 2019 दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन पे आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ चुका है 17 के आसपास में। हालांकि आप देखें कि दोबारा ये गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कम अप विद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन द नेक्स्ट विंटर सेशन, ठीक है। यूसीसी पे देखते हैं अभी आगे क्या मूव होता है। हालांकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। There have been certain changes in the state of Assam as well regarding registration of marriages, uh, uh, regarding age of women. You know, that women a girl cannot be married if she is below 18 years of age. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हमने इस टॉपिक को उठाया है। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करें तो व्हाट डज इट मीन। इसको रेफर किया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। इट मीन्स दैट कि द इलेक्शंस टू लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दैट्स विधानसभा एंड म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, इलेक्शंस टू ऑल दिस बॉडीज मस्ट बी कंडक्टेड एट द सेम टाइम। अभी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है दैट जब इनका इलेक्शन हो जाएगा आफ्टर 100 days म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन, ठीक है। 100 दिन का डिफरेंस भी दोनों का इलेक्शन होगा। एनीवे अभी क्या कैसे होता है इलेक्शन, पहले हम क्या देखेंगे कि इलेक्शन अभी कैसे होता है, कमेटी ने क्या कहा है, ठीक है। अभी आपको मैं ब्रीफ बता देता हूँ क्या क्या हम उसमें डिस्कस करेंगे। करंट अरेंजमेंट, कमेटी रिकमेंडेशन, और क्या इसके अलावा पहले और किसने किसने रिकमेंड किया है, देन वी विल सी आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, ठीक है। वे फॉरवर्ड तो इसी से इस डिबेट से निकल जाएगा, ठीक है। तो करंट अरेंजमेंट क्या है, हाउ द इलेक्शंस टेक प्लेस टुडे। सी there are two bodies that conduct elections in India. First is Election Commission of India. It conducts elections for president, vice president, Lok Sabha, state legislature, and also Rajya Sabha. When we are talking about simultaneous elections, we are not talking about elections of president, vice president, and Rajya Sabha. ठीक है, you are talking about Lok Sabha and state legislature. ठीक है, अच्छा, to conduct elections to Lok Sabha and state legislature, Election Commission of India has what is called as electoral roll. Electoral roll. What does it mean? Electoral means list of voters. जो लिस्ट होता है जिसमें जाके आपका नाम, आपका आईडी लेके आपका नाम वेरीफाई किया जाता है, देन यू गो फॉर वोटिंग, ठीक है। देन देयर इज वन मोर बॉडी टू कंडक्ट इलेक्शंस, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इट हैज द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायत एंड municipalities. It has a separate electoral roll. Separate electoral roll. The voter list for Lok Sabha and Vidhan Sabha elections is one. Voter list for municipal and panchayat elections is separate, and it is the responsibility of state election commission to update this electoral roll, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इट अपडेट्स द इलेक्टोरल रोल फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस
और ये इट टेक्स प्लेस एवरी 3 मंथ, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना सेपरेट अपडेशन करता है। एक प्रॉब्लम भी है इसमें, इनमें डिस्क्रिपेंसी भी है। इट्स पॉसिबल दैट यू हैव योर नेम इन इलेक्टोरल रोल विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन आपका इसमें नाम नहीं है। ये भी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आते हैं कि अब क्या चल रहा है, जो अभी करंट में बात हो रही है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। जो हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा एंड आफ्टर 100 days पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अब देखें बेसिकली है क्या कि स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा का, है ना, this is the responsibility or the matter of elections to Lok Sabha and state legislature falls in union list, and matters of elections to panchayat and municipality falls in state list, ठीक है। therefore यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ऑल राइट, तो जो लेट मी सी है, ठीक है। सो जो कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए गए हैं कमेटी के बाद, हालांकि जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसमें है 4 बेसिकली सजेशंस हैं। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल इलेक्टोरल रूल, एंड इन केस ऑफ हंग हाउस और लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट की 4 ब्रॉड रिकमेंडेशंस मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। कमेटी ने कहा क्या है, लास्ट ईयर इन 2023 सितंबर a committee under the chairmanship of former President Ramnath Kovind was formed, and it gave its recommendations in February 2024, और इन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं। चेंजेस क्या सजेस्ट किए हैं, इन्होंने सजेशन ये किया है दैट वी नीड टू ऐड आर्टिकल 82A in the, what will article 82A says, it will introduce what is called as appointed date. Appointed date, what does it mean? It means that कि वी हैव टू एक्चुअली 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि कमिटी ने सजेस्ट किया है कि हाउ टू ट्रांजिशन टू द साइमल्टेनियस इलेक्शंस फर्स्ट। सेकंड कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट फॉलिंग बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स व्हाट शुड हैपन, ठीक है। सेकंड ये सेंट्रल की बात है कि ट्रांजिशन टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन केस ऑफ हंग असेंबली क्या होगा, ठीक है। हंग असेंबली लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड इज दैट, ये फर्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशन है। सेकंड है म्युनिसिपैलिटी पंचायत के इलेक्शंस प्लस सिंगल इलेक्टोरल रोल, ठीक है, इस पर बात कर रहे हैं। अभी और क्लियर हो जाएगा, 5 मिनट आप बस वेट कीजिए। कमिटी ने रिकमेंड किया है दैट वी नीड टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड अपॉइंटेड डेट। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि आफ्टर जनरल इलेक्शन, the on the first day of the sitting of the Lok Sabha, the president will notify what is called as appointed date. And every election after the appointed date, स्टेट असेंबली में इलेक्शन होंगे आफ्टर द अपॉइंटेड डेट, है ना, the term of state assembly will come to an end with Lok Sabha. For example, let's say कि 1 जनवरी 2025 अपॉइंटेड डेट है, प्रोवाइडेड कि बिफोर 1 जनवरी the government has been able to pass what is called as constitution amendment bill, and that requires 2/3 majority. जो कमिटी ने रिकमेंड किया है, कमिटी has recommended more than 20 changes in the constitution, ठीक है। तो लेट्स से कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया, चेंजेस हो गए, और जनवरी को नोटिफाई कर दिया गया। अगर 1 जनवरी 2025 को नोटिफाई कर दिया गया, every election, let's say कि there is going to be election in UP,
दैट इज मार्च 2027। अगर 2027 में इलेक्शन होते हैं, यूपी असेंबली का जो टर्म है इट विल कम टू एन एंड विद द टर्म ऑफ लोकसभा, दैट इज मई 2029। यूपी का जो टर्म रहेगा वो सिर्फ 2 साल का रहेगा लगभग। So is the case with so will be the case with other assemblies, other legislatures। चाहे वो आप आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर दिल्ली में होने वाला है, बिहार में होने वाला है इलेक्शंस, देन इन 2025 विल हैव इलेक्शंस इन बंगाल, तमिलनाडु, है ना। जितने भी इलेक्शंस होंगे सबका टर्म खत्म हो जाएगा बाय द टाइम ऑफ लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अच्छा, ये आपको समझ में आया कि अपॉइंटेड डेट क्या होता है? कि अपॉइंटेड डेट, एक डेट क्लियर किया जाएगा कि इस डेट के बाद जो भी इलेक्शंस होंगे द टर्म ऑफ दैट असेंबली विल कम टू एन एंड विद द लोकसभा। और लोकसभा के अब 7 इलेक्शन होंगे। होगा क्या कि अब इनका जो है, जो सिटी है वो लोकसभा के साथ इनका टाइप हो जाएगा कि जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे तो वैसे विधानसभा के भी चुनाव होंगे, है ना। अच्छा, इन्होंने सजेस्ट किया है टू अमेंड आर्टिकल 320, आर्टिकल 3, एक सेकेंड, 327, 327 क्यों? बिकॉज इट इज द आर्टिकल 327 दैट गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक रूल एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट कि आर्टिकल 327 में वी नीड टू ऐड टर्म कॉल्ड एज कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। मतलब ये है कि Article 327 gives Parliament the power to make laws relating to elections to Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislatures. It also talks about preparation of electoral rolls. तो एक तो important changes बताया गया आर्टिकल 82A, and Article 327 needs to be amended, and conduct of simultaneous elections need to be added into the constitution. और क्या मेजर चेंजेस सजेस्ट किए हैं? सी आर्टिकल 83, 172, ठीक है। जो आर्टिकल 83 और 172 हैं, दे टॉक अबाउट 5 year टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। लोकसभा का कितना टर्म होना चाहिए? इट्स बाई आर्टिकल 83 लोकसभा एंड 172 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है कि we need to change the terminology in article 83 and 172। और टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी? इंस्टेड ऑफ 5 year इट विल बी फुल टर्म। फुल टर्म, फुल टर्म क्यों ऐड किया जा रहा है? क्योंकि इनके स्लेट से कि कोई असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर हुआ 5 साल के लिए, एंड वी हैव ट्रांजिशन टू साइमल्टेनियस। होता क्या है कि फॉर सम रीजन इन ड्यू कोर्स द गवर्नमेंट फॉल्स, असेंबली हो गया तब क्या होगा कि a state legislature is able to complete only 4 years। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, सरकार गिर गई, तब क्या होगा? तो दो चीजें सजेस्ट की गई हैं यहाँ पे। पहला, फुल टर्म 5 year नहीं होगा, और अगर सरकार गिर गई इन बिटवीन तो एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अनएक्सपायर्ड टर्म। मींस इलेक्शंस होंगे बट इलेक्शंस विल टेक प्लेस ओनली फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, दैट इज 1 year। मतलब कि लेट्स से कि we have transitioned to a simultaneous elections, and in between let's say कि 2029 में simultaneous elections होते हैं, and for some reason a state government falls after 2 years। So after 2 years the elections will take place in that state assembly, but only for the remaining term, unexpired term, 5 साल के लिए नहीं होगा। जनरली होता ये है कि अगर सरकार गिरती है कभी भी, दोबारा चुनाव होते हैं तो न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर द 5 year टर्म, है ना। बट इन दिस केस the new government will have tenure only for the remaining unexpired term,
अगर पहली सरकार ने 4 ईयर सरकार चलाया, तो सेकेंड गवर्नमेंट विल हैव ओनली 1 ईयर, नॉट 5 ईयर। होगा क्या कि 1 ईयर के बाद 5 साल हो जाएंगे, अगेन उसमें दोबारा चुनाव होंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट किया गया है कि लोकसभा के साथ साथ में सारे विधानसभा के चुनाव होंगे। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरी की बात होगी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का। अब क्या बात, सेकंड क्या है, अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का। अब देखिए, जो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस है, दैट फॉल्स इनटू स्टेट लिस्ट। एंट्री एंट्री 5 है, if I'm correct। हाँ, एंट्री 5 है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। The moment the moment parliament legislates on state list, it needs concurrence of at least half of the state assemblies। ठीक है, at least half of the state assemblies। इसमें इन्होंने बेसिकली दो चेंजेस सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट इज दैट अमेंड आर्टिकल 324 ना, एंड उसमें जो है टू अमेंडमेंट, इट विल empower the parliament to also conduct elections for municipality as well as पंचायत इलेक्शन। अभी क्या है, अभी द अथॉरिटी लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द इलेक्शंस। नाउ विद द चेंजेस इन द आर्टिकल 324, द Khalid is asking, sir, if your appointed date is 1st January, then a new election for Lok Sabha। नहीं नहीं, Khalid, the next election due for Lok Sabha is in 2029, and if the appointed date is 2025, so all the state assemblies they will end with the Lok Sabha। और 2029 में सारे लोकसभा कब होगा, एंड ऑल्सो एवरी स्टेट असेंबली, है ना। ठीक है, तो लोकसभा का जो टाइमिंग है इलेक्शन का, सारे स्टेट्स का जो इलेक्शन होगा उनके साथ तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो पहली बात है कि आर्टिकल 324 टू एम्पावर पार्लियामेंट टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस आल्सो फॉर म्युनिसिपैलिटीज एज वेल एज। सेकंड इज आर्टिकल 325, है ना। इसमें बात की गई है सिंगल इलेक्टोरल रोल, जो लिस्ट होगा वोटर वो सेम होगा, है ना। तो आर्टिकल 325 को अमेंड करके द पार्लियामेंट शुड बी गिवन पावर, और रादर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी गिवन पावर टू डेवलप और टू हैव सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर both legislature and Lok Sabha and state legislature as well as पंचायत and municipality। ठीक है, जैसे मैंने को बताया बिगिनिंग में कि दैट द वोटर लिस्ट फॉर द लोकसभा स्लैश विधानसभा एंड पंचायत स्लैश म्यूनिसिपैलिटी, द वोटर लिस्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो बेसिकली चार मेन चेंजेस हैं। आर्टिकल इंसर्शन ऑफ ए न्यू आर्टिकल 82A that will introduce what is called as appointed date। Then you have Article 83, Article 172 changes that will introduce, instead of 5 year term, it will talk about full term। Full term भी 5 year ही होगा, लेकिन it will have provision of unexpired term। If the government falls in between, the new elections will take place, but only for the unexpired term, not full 5 year term। होगा क्या, it will have again elections in the Lok Sabha। All right, this is about Lok Sabha and state legislature elections। Then municipal and municipality, two changes। First change is about giving power to the parliament to regulate elections for panchayat and municipality। Current power is with the state government। First change is, second change है changes in Article 325 so that Election Commission of India can be empowered to develop single electoral roll, that is single voter list, है ना। तो ये मेन चेंजेस है, मैंने आपको उसमें दिया है नोट्स में, यहाँ पे। ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड है सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी। हंग हाउस हो जाए तो क्या होगा, री इलेक्शन होगा, बट ओनली फॉर द रिमेनिंग टर्म, नॉट फुल टर्म। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं दैट द इलेक्शन कमीशन विल प्लान logistical requirements in consultation with state election commission। मैंने आपको ये बताया कि पहले 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 क्या एफर्ट्स हुए हैं रिगार्डिंग इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन। होता क्या था ना कि दैट until 1967